Good morning students, welcome to my class. Today we are going to learn the new chapter biomolecules. Now what is biomolecule? Biomolecule is the lifeless molecule which combine in specific manner to produce life or control biological reaction. तो बायोमोलिक्यूल क्या है? एक लाइफलेस मॉलिक्यूल है, वो इस तरह से कंबाइन होता है ताकि वो दूसरों को लाइफ दे. मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल क्या, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है. तो कार्बोहाइड्रेट में लाइफ नहीं है, लेकिन ये इससे हमें लाइफ मिलती है. प्रोटीन्स उसी तरह से, न्यूक्लिक एसिड उसी तरह से. तो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स इज द कार्बोहाइड्रेट. नाउ व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज optically active polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone or the compound that on hydrolysis give polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. Okay, now see here what is optically active. Now see here, optically active means that should have a symmetric center, that should have a symmetric carbon atom. If the molecule have a symmetric center, that molecule is optically active. And the optically active molecule that rotate the ppl either clockwise or anti-clockwise. For example, glucose. Okay, what is the formula of glucose? Glucose का formula क्या है? C6H12O6. And what is the structural formula of glucose? Glucose is aldehyde. Structural formula is HOH, H, then HOH और लास्ट में क्या है? CH2H. ओके, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. वाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव? वाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव? बिकॉज इट रोटेट द PPL either clockwise or anti-clockwise. Now see here, if the molecule have asymmetric center, see here what is the valency of the carbon atom? 4. If the 4 valency of the carbon atom are satisfied by 4 different atoms or group of atoms, such center is known as asymmetric center. जैसे ये कार्बन एटम, कार्बन का वैलेंसी क्या है? 4 है. If the 4 valency, let us take the example, are satisfied by 4 different atoms or group of atom. क्लोरीन है एक, OH ग्रुप है, ओके, एक है COOH. तो ये पूरे ग्रुप क्या है? डिफरेंट है. तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर जो है इसे क्या कहते हैं? असिमेट्रिक सेंटर. ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्ट हुआ है. इसमें से अगर लाइट रेडिएशन पास होता है, द ट्रांसमिटेड लाइट रोटेट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड सच टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल विच रोटेट द PPL क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. तो ग्लूकोज क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि जैसे फर्स्ट कार्बन एटम में अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. सेकेंड कार्बन एटम इट इज असिमेट्रिक. वाई इट इज असिमेट्रिक? क्योंकि एक OH है, एक H है, एक CH है, और बाकी 4 बॉन्ड जो है यहाँ से जो लिंक हुआ है, यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप लिंक हुआ है, तो ये असिमेट्रिक है. करेक्ट है. उसके बाद वाला कार्बन एटम ये फिर से असिमेट्रिक है. वाई इट इज असिमेट्रिक? क्योंकि OH H ऊपर का ग्रुप, मतलब ये भी असिमेट्रिक है. उसी तरह से ये भी असिमेट्रिक है, ये भी असिमेट्रिक है. दैट मीन्स इट हैव टोटल 4 असिमेट्रिक सेंटर. ओके, मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. डेफिनेशन में क्या लिखा है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी. और पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे? एक OH, 2 OH, 3 OH, मतलब मोर देन 2. तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी. अल्डेहाइड, एक तो कार्बोहाइड्रेट अल्डेहाइड होगा या तो कीटोन रहेगा. और द सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. डिफाइन कार्बोहाइड्रेट. बहुत बार पूछा है कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन. तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव. अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिव भूल गए लिखना तो 0 मार्क मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है? डेफिनेशन में एक तो 1 मार्क्स मिलता है, अगर गलत हुआ है तो 0 मार्क. ठीक है. तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन. कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप से क्लासीफाई किया है. ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, on the basis of solubility
एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। ओके, तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप है, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नाउ व्हाट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जिस कार्बोहाइड्रेट का फिर से हाइड्रोलिसिस नहीं होता है टू एनी सिंपलर शुगर, मतलब उसके बाद और सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं होता, इज कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज, ओके, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स मोनोसैकेराइड। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? मोनोसैकेराइड दैट कैन नॉट बी, जैसे ग्लूकोज को अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होता, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहता। वही अगर आपने NaCl को पानी में डिजोल्व कर दिए तो देर एट द टाइम देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व कर दिए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड अनदर सॉल्ट। ओके, सेकेंड टाइप है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीन्स on hydrolysis it give large number of monosaccharide. It is again classified into two type, oligosaccharide and polysaccharide. तो पहला टाइप है ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलिसिस yield 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब 2 से 10 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलेंगे, उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। Oligosaccharide. It is further classified as disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide. Now what is disaccharide? Disaccharide means on hydrolysis give 2 molecule of monosaccharide. What is trisaccharide? On hydrolysis give 3 molecules of monosaccharide. What is tetrasaccharide? On hydrolysis give 4 molecules of monosaccharide. Okay, so oligosaccharide again classified into disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide. So what is disaccharide? On hydrolysis give 2 molecule of monosaccharide. Okay, disaccharide on hydrolysis. तो अब disaccharide का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? Now see here, what is the formula of glucose? C6H12O6. तो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? डाई का मतलब 2, यहाँ पे कार्बन क्या है? 6 है, 6 का डबल क्या हो जाएगा? 12। तो हाइड्रोजन क्या रहेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन क्या उसका डबल 12, तो यहाँ पे 12 का डबल क्या रहेगा? 24। लेकिन डाइसैकेराइड में क्या करना? 2 माइनस करना है। ओके, डाइसैकेराइड में 2 माइनस करना है, डाई में 2 माइनस, ओके, इन ट्राई -4 और टेट्रा डबल के -6, इस तरह से प्रोसीड करना, डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर हाइड्रोजन क्या रहेगा? 24 का डबल क्या है? 12 का डबल क्या है? 24 में से 2 माइनस किए तो क्या रहेगा? 22। और ऑक्सीजन क्या है? 11। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ट्राइसैकेराइड? तो यहाँ पे 6 है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 18। और हाइड्रोजन क्या रहेगा? 18 का डबल 36। अब 36 से 4 माइनस कर दो तो क्या रहेगा? 32। तो फिर ऑक्सीजन क्या रहेगा? 32 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 16। ओके, नाउ टेट्रासैकेराइड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ टेट्रासैकेराइड? 4, 6 × 4 24। अब 24 का डबल क्या रहेगा? 48। और 48 में से 6 माइनस कर दो, क्या रहेगा? 42। तो ऑक्सीजन क्या रहेगा? 21। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। नाउ सी हियर, disaccharide. What is the definition of disaccharide on the basis of hydrolysis is that disaccharide on hydrolysis give 2 molecules of monosaccharide. For example, sucrose. Okay. What is the formula of sucrose? C12H22O11. What is the formula of maltose? C12H22O11. What is the formula of lactose?
C12H22O11. All the molecule on hydrolysis give 2 monosaccharide. ओके जैसे कि सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस किए तो एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रुक्टोज मिलेगा. माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 2 monosaccharide. Lactose on hydrolysis give glucose and galactose. Okay. Next is the trisaccharide. On hydrolysis give 3 molecules of monosaccharide. Example, what is the formula of trisaccharide? C18H32O16. For example, raffinose on hydrolysis give 3 monosaccharide, glucose, fructose, galactose. Next is tetrasaccharide. Okay, on hydrolysis give 4 molecules of monosaccharide. Example is stachyose on hydrolysis give 4 molecule of monosaccharide, glucose, fructose, galactose, galactose means 4 monosaccharide. Second classification of the complex carbohydrate, that is polysaccharide. Now what is the formula of polysaccharide? C6H10O5N. Now what is polysaccharide? A carbohydrate that on hydrolysis gives large number of monosaccharide. Okay, example starch, cellulose, glycogen, gums. So these are all about the classification of the carbohydrate on the basis of the hydrolysis. Now again see here, on the basis of the hydrolysis, carbohydrate are classified into 2 types. Carbohydrate क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप. कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप है. फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स मोनोसैकेराइड. सिंपल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड. ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर. सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फिर से हाइड्रोलिसिस नहीं होता. बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोनोसैकेराइड. ओके, complex carbohydrate again classified into 2 type. First is oligosaccharide. Okay, oligosaccharide. And second type polysaccharide. Okay, now what is oligosaccharide? On hydrolysis give 2 to 10 molecule of monosaccharide. 2 से 10 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलेंगे. दैट इज नोन एज ओलिगोसैकेराइड. नाउ व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड. ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड फॉर्म, ओलिगोसैकेराइड अगेन क्लासिफाइड इनटू डाइसैकेराइड, it give 2 molecule of monosaccharide, trisaccharide, it give 3 molecule of monosaccharide, tetrasaccharide, it give 4 molecule of monosaccharide. ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा है उसके शॉर्टकट एक बार फिर से है. कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप है, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. नाउ व्हाट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर. एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. What is oligosaccharide? On hydrolysis give 2 to 10 molecule of monosaccharide. Polysaccharide give large number of monosaccharide.
Depending on the number of the monosaccharide form, oligosaccharide again classified into disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide. Now what is di? It give 2 molecule of monosaccharide. Example, sucrose, maltose, lactose. Trisaccharide on hydrolysis give 3 molecule of monosaccharide. Example, raffinose. Now what is tetrasaccharide? On hydrolysis give 4 molecule of monosaccharide. Example, stachyose. So these are all about the classification of the carbohydrate on the basis of hydrolysis. Thank you.